सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सिग्मा आर स्क्वायर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिग्मा आर स्क्वायर, r from 1 to n, r is variable, r from 1 to n, it can be written as r, हम लिख सकते हैं r is equal to 1 तो 1 का स्क्वायर, सिग्मा यानी प्लस, r is equal to 2 तो 2 का स्क्वायर, सिग्मा यानी प्लस, r is equal to 3 तो 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, r is equal to n तो प्लस n स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। लेट दिस वैल्यू इन s, we have to find the value of s। मान लिया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो s का वैल्यू हमको निकालना है। वी नो दैट द आइडेंटिटी k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k क्यूब इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। k प्लस 1 होल क्यूब में अगर k क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना हो जाएगा। Putting value of k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3, and so on, k is equal to n, we get here. K is equal to 1, it becomes 1 plus 1 whole cube, yani 2 cube, minus 1 cube, it is equal to 3 into 1 square, plus 3 into 1, plus 1, k का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, k का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 plus 1, 3 whole cube, minus 2 cube, k is equal to 2, is equal to 3 into 2 square, plus 3 into 2, plus 1, k is equal to 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 plus 1, 4 whole cube minus 3 cube, 4 whole cube minus 3 cube is equal to 3 into 3 square, k is equal to 3, plus 3 into 3 plus 1, k का वैल्यू 3 पुट कर दी, एंड सो ऑन, इस तरह से पुट करते जा रहे हैं। k is equal to n पुट कीजिए, तो n plus 1 whole cube minus n cube, n plus 1 whole cube minus n cube is equal to 3 into n square plus 3 into n plus 1. Adding we get 2 cube plus 2 cube minus, ये कैंसिल, 3 cube plus 3 cube minus, ये कैंसिल, ये इधर से लेफ्ट इधर से नीचे वाला राइट, ऐसे करते जाएगा, ये ऐसे करते जाएगा, तो यहाँ पर बच गया n plus 1 whole cube और minus 1 cube, n plus 1 whole cube और minus 1 cube तो 1 is equal to 3 into 3 कॉमन ले लिए सब में, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर। इसमें भी 3 into 1 plus 3 into 2 plus 3 into 3 plus so on plus 3 into n, तो प्लस 3 कॉमन, 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n, फिर plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 so on up to n times, so plus 1 into n times, minus n plus 1 whole cube minus 1 is equal to 3 into s, its value is s here, plus 3 into 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n, sum to first n natural numbers,
its value, इससे पहले वाले वीडियो में दिखलाए थे, its value is n into n plus 1 by 2 plus 1 into n then. इस दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, इधर पर जाएगा केवल 3s इक्वल टू 3s इक्वल टू n plus 1 whole cube n cube plus 3n square plus 3n plus 1 n plus 1 whole cube minus 1, इसको इधर ला रहे हैं, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 3n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और इसको भी इधर ला रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस है, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, अब 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n इंटू n, तो माइनस 3n स्क्वायर minus 3n into 1, तो minus 3n, minus 2n, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और 6s इक्वल टू 2n क्यूब 6n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर, तो प्लस 3n स्क्वायर 6n और माइनस 5n, माइनस 3n माइनस 2n, तो माइनस 5n, तो प्लस n, फैक्टर इसका 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, इसको लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस n, here 2n common, 2n square common, 2n square common, it becomes n plus 1. Plus n common here, it becomes n plus 1. N plus 1 common, it becomes 2n square plus n. Here also n common, it becomes n into n common here, n into n plus 1. N common, it becomes 2n plus 1. 6s equal to n into n plus 1 into 2n plus 1. Therefore, s equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. यानी हम कह सकते हैं सिग्मा r स्क्वायर r from 1 to n, that is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. इसी तरह से sum of cube of first and natural number, sigma r cube, r from 1 to n, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on plus n cube, its value becomes n into n plus 1
by 2 होल स्क्वायर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। In sigma r square, sigma r cube, its value is very, very important to solve a problem and